Hi guys, good evening everyone. Welcome to the session and welcome to the important session for GATE 2023 aspirants. As you all know that there are definitely some controversial and confusing questions in the GATE 2023 for EE and EC and as well in the instrumentation branches because many ECEE students also appear in IN, so they'll be looking forward for IN also. So here I am along with Ashutosh sir and we have Ashu sir live from Chandigarh. We are all three here to discuss up those questions which we think should be challenged in the GATE 23 examination, and we'll tell you the logic behind that. So number one, what are those questions? What is the answer given by IIT? What should be the correct answer? And maybe there are some flaw in the statement of some question. What is that flaw? We are going to discuss up all possible remarks. Over to you, Ashutosh sir. Thank you so much, sir. So guys, this session is going to be the final session for all the hue and cry, all the discussions, all the arguments, sleepless nights you might be involved in discussing questions with your favorite faculties, because this session we are giving you the final say for EC, electrical and IN, those questions which are either not answers are not matching as per the keys given by the IIT, or there are some input required, or it may be out of syllabus also. So Ashu sir is also going to give his views on this particular session. What is going to be our agenda? Over to you, Ashu sir. Thank you, Ashutosh sir, and hello guys. I hope you all are fine there. So in today's session, we'll mainly discuss about the questions and the answer keys provided by the IITs. So there are some questions which are challengeable. So because the statement is not that clear or the answers are different. So we will discuss those questions and we will tell you about those questions, and we'll tell you how to challenge, not how to challenge exactly, but we'll provide you the PDF after the session, because that PDF will be provided by the faculty itself if you are in touch with the faculty. So we will also provide you the entire correct solution so that you can post it in a sequential manner. So that will be very helpful for you guys. And in today's session, we'll discuss that only. So don't forget to like this session and subscribe our channel. So Ashutosh sir and Rakesh sir, so please continue. Yeah, and definitely. So definitely, as Ashu sir said, I'll also add on, guys. First, let us discuss all amongst ourselves. After the session, we'll give you the PDF branch-wise. What are the questions to be challenged in EC and what logic you can write to the IIT if you are planning to challenge. Okay, we'll give you according to our expertise, handwritten. Okay, sir, before we start, I think let us tell our students that what is going to be the sequence, because first we are going to discuss, I think, EC. Yeah, so first we'll start with EC, but all students can stay tuned because for EC, we're not going to take much time. Okay, we'll try to keep it as a brief session because here we are going to tell you what are the questions to be challenged. Earlier also we have discussed what is the correct solution, what is not the correct solution. Yes. Right. So before I just start up, just one update that 23rd February, which is just tomorrow at 7:30 p.m., all your favorite Richa madam is going to come up and she's taking a free workshop on how to ace GATE 2024 along with your college and job. Many students are preparing parallelly with that. Okay. So let us move ahead then. And guys, very important updates for GATE 23 aspirants. Although GATE 2023 exam is over, but many of you might be willing to prepare for the BARC examination as well. And here we bring to you the Parmanu series. Yes, the Parmanu series, which is going to be live from 24th of February. Okay, so most important questions for BARC 2023 will be discussed. So stay tuned to the BYJU'S Exam Prep YouTube channel and let us get started, guys. This is the first question here. Okay, so question number 58 of EC. It's very simple, nothing great here. What is the official answer given? And I think IIT has not made any mistake here. I think mera aisa manna hai ki they've given some typo error, because by any logic 70 nahi aayega. The integral yt dt is nothing but area of yt. I'll tell you the simplest possibility here. Area of yt, and yt is the convolution of x1 and x2. So that should be equal to area of x1 multiplied by the area of x2. Right? x1 ka area aa jayega 3. I'm not explaining in detail, just giving you the brief hints because it is a unit step, a subtraction of unit step. Rectangular pulse aane wala hai with the width equal to 3. Okay, so area will be 3. And what is the area of this signal? 1 plus 2 plus 2. So area of the x2 signal is equal to 5. 2 plus 1, 2 and 1, right? So total answer becomes the 3 cross 5. It is very simple answer, 15 hi aane wala hai. So this question is going to be challenged. Okay, this question is going to be challenged. Okay, again I repeat, शायद IIT का final answer देते समय कुछ mistake हो गई है, maybe typo error हो गया because there is in this question I believe. Okay, okay guys. Yeah, क्या? Just let me check on the YouTube as well.
Sir, I think video is not available. It is okay now. Yeah, it is okay now, guys. I think there was some interruption with the video. Let us continue, guys. So the second question that we have brought for you is the question number 60 from EMT. Now, there is nothing like wrong with the question, and I'll ask Ashu Shankar sir also to join with me. The only logic is dielectric coating is applied to glass to eliminate the reflection of red light. What is the minimum thickness of the dielectric coating in micrometer that can be used? It is a straight, sir. Again, I think connection error. Here's what I found. Some issue is happening. Right. Ashu sir, are you able to listen to me? I think yes, sir. Yeah. Okay. So guys, yes, if you just see, this is a direct question from David Cheng. Why we have brought this? Why me and Ashu sir have brought this? Answer given as 0.12 to 0.14. Answer can come up as 0.133 micrometer. But if we assume normal incidence, if we assume that the red light is normally incident, then definitely I go. But where is that? Whether it is normal incident or not? I think mera videos are again going. Audio is not clear, sir. Video. Actually, the video is not clear. Yeah. Baba video band ho ja raha hai. Okay, guys. So please wait, and sir will join in a while, and then till then, actually, yes, sir, yes. Okay. Guys, normal incident ऐसा कहीं mention नहीं है कि how the red light is going to fall, and that is why this question, because many students were confused, even students admitted that they were confused what case to be taken. So eventually when the data is clear, it is, see why we want you to challenge this, because whenever there is some incomplete question, whenever there is some incomplete data at the time of examination, students are wasting the lot of important minutes that they can utilize to solve. So it is not really fair to, not type of case they have given. So let me continue, guys, because there is an error from Rakesh Sir. Yes, sir. But Ashu sir, please continue. I think there is some technical issue, so the team is working on that. By the time you can continue. Okay. So this is the direct question from Cheng. And let me tell you guys, this is unsolved question from that book. And in that book also, it is solved with the help of normal incidence. But the thing is, why we are challenging this question and why we want to challenge this question is, nothing is mentioned. There was one more question which I have already shared with you in the photograph, and there was a solved question 88.12. I don't know the exact picture, exact example. 8.12. It's a solved example in your Cheng book, and you can see that in that question it is clearly mentioned that the incidence is normal. But in this question, normal incidence is not provided to you. If normal incidence is not provided, then it's very difficult to solve this question. Okay, so that's the main thing, because if I'm reading this question, then by default I cannot think that it's a no, because if you are solving some book, like some exercise, then there is a context in your mind, and the context is very simple. The context is they have provided you the chapter of normal incidence, and after that chapter they are giving you this question. So you know that you have to apply the normal incidence concept. But now it's a random question. You are solving a random question, and whenever you are looking this question, then you will not find normal incidence in this situation. So there should be a correction in the question. They should provide that the incidence is normal, because you can't take it. You can't take it by default, because normal incidence is a specific case. It's not a generalized case, because in generalized case we take oblique incidence. Yes, so that's why we want to challenge this question, Rakesh sir. And even sir, when this question is given in the David Cheng, it is in the solved problems, and there is a second part of the question where they are talking about violet light, and then that violet light question they have clearly given normal incidence. If violet light is shown normally, okay, so they have mentioned a clear case of normal incidence in the second part. Right, but not in this particular first part. Now, what is there in the book question? And that is a conventional question in David Cheng. If there is a conventional question, and suppose this was a conventional question somewhere in ECE, there you can write, I am assuming normal incidence and this is the solution. But in GATE, you can't say what I'm assuming, what I'm not assuming. So there has to be a clear-cut 100% specified question, right? So I don't know whether IIT will not, but according to a big discussion between me and Ashu sir, students can try to definitely, because the data
Yes, that's the main problem, sir. Actually, we are just hoping that IIT will consider this case, because normal incidence was not mentioned in the part B of the same question. If you look at the exercise, unsolved exercise of David Cheng, then you will find that there is one more part of this question, and in that question it is clearly mentioned that the incidence is normal. So you have to take normal incidence, then only you can solve this question. Otherwise, this question is not solvable. Okay. That's the main problem with this question, and we will provide you the entire sheet in which everything is written so that you can claim it easily. Okay, so we'll provide you the written, handwritten things, and or maybe in a typed form so that you can claim accordingly, and we will tell you how to claim that. So don't worry, guys. But this question, I think this question should go with the normal incidence, and since normal incidence is not given, so it should be given marks to all. Okay. That's our logic, that's our idea. hope. Yes. Again, I say I don't know what IIT can come up and say ki aap assume kar lo, but we can try, guys. We can try for this. That's what me and Ashu sir have discussed a lot on this, and we can try on this. Definitely, it's worth giving a try, right? So now I think next question Ashu sir will take. By that time, we'll check on why again and again video is getting off. So Ashu sir, please carry on with the network and unlock question. Students are asking about that unlock question also, right? Yes, sir. So this was a question, and in this question, let me tell you guys what is the main problem with this question. It is given that the hybrid parameter of two-port network are shown in the figure. So this first line is wrong. These are not hybrid parameter. Okay, H parameter of two-port network are shown below. Actually, these are not H parameter. This diagram doesn't show the H parameter. Okay, if you write the equation, then Vs will be equal to H11I1 plus H12V2. Now this equation is correct. Okay, but if you write this equation, then V2 has to be equal to this current plus this current. Okay, now look at this. V2 will be equal to Vs is V1. Okay, Vs is V1 because the source voltage and V1 is same. Now look at this voltage. V2 is equal to H21V1 plus, now we don't know this unit. We don't know the unit of this H22. Okay. Now generally we write it like this, H22V2. Generally we take it in mho. Okay. Because this is current. Wait a minute, I have written it wrong. So let me erase this. So I2 has to be equal to, okay, this current I2 has to be equal to this current plus this current. Okay, and this current is H21V1 and this current has to be H22V2. Now according to this written equation, if this is V2, this has to be in mho, so that if this is ampere, this has to be in ampere, this has to be in ampere. So this has to be in mho, this has to be in mho. Okay, now if you write the H parameter, generally in H parameter what we have is, let's say we have a two-port network. In two-port network we have this V1 and this as I1, and this is V2 and this is I2. Okay, so if you write the equation of H parameter, then V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. Similarly, I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. Okay, now look at this. If the H parameter are there, then the equation should be like this. It means this has to be in terms of I1, and the unit of H21 has to be in H21 has to be dimensionless, and H22 has to be in mho. But now, since this is not H parameter equation, you can't assume that H22 is of mho and H21 is of mho. Okay, so if you are taking H21 as mho and H22 as mho, then obviously you can say that it's not satisfying the units. Okay, it's not satisfying the H parameter equation. That's the main problem. The units are not mentioned here. And according to the equation, this has to be in mho, this has to be in mho. But in H parameter, this is dimensionless and this has to be in mho. This is the main problem. The next problem is, if you look at the A option, in A option, H11 and H12 is 0. If you put H11 as 0, it means it's sorted, and H12 as 0, then this voltage source will also be short circuited. Okay, it will also be short circuited. Now you can see that the voltage source Vs is sorted. Now it violates the KVL. It violates the KVL. So that's why
because if ideal voltage source can never be short circuited. That's why this question is wrong. I hope it is clear why this question is wrong. So you can claim accordingly. Okay, so this question has to be marks to all. This question has to be marks to all. Okay, marks to all. This has to be marks to all, because this question is contradictory. It's not satisfying the things which are provided. I mean, the statement and the diagram is contradictory. Moreover, the units are not provided, so we can't write. And moreover, the answer given is itself contradictory. Okay, so that's why this is wrong. I hope it is clear. So let's move to the next question. And next question is again from ECE. So it's in this question, this is a EDC question, electronic devices question, and Rakesh Sir has provided me the solution for this question. So let me tell you that solution. In this question, you know that if you take EF minus EV as 0.35 electron volt, if you take EF minus EV as 0.35 electron volt, okay, then the answer came out to be, with this value, the concentration of hole came out to be 63.4 into 10 is to the power 13 per centimeter cube. Okay, per centimeter cube. So this is the answer with this difference. Now there is a problem. Actually, this answer is not provided to you, and there is one more problem in this question. The value of EF minus EV is not given at a specific temperature. EF minus EV value is not provided at some specific temperature. Actually, the temperature is not mentioned. Temperature is not mentioned at which, I mean, this solution, this answer came, if you are assuming this as constant, if you are assuming that this is not varying with temperature, if the temperature variation is neglected, then only you will get this answer. Okay. But the problem is, there are so many questions in this, there are so many doubts in this question. This EF minus EV is a temperature dependent quantity. So obviously, temperature is not mentioned in this question. So, I mean, there should be a variation. So you can go with the MTA also, marks to all also. Because if temperature variation is not given, then it has to be, I mean, it has to be marks to all. But if they are considering that EF minus EV is constant, if there is no temperature variation, okay, then what you can do is, then you can challenge for the answer. Okay, the answer should be like this, and it is not provided in the question. Okay, so this was the question from Rakesh Sir, and answer provided by the ITs from 69 to 70. So there is a variation in that answer. I hope it is clear. So you can claim it accordingly. So let's come to the next question, guys. Let's come to the next question. In this question again, this is an oscillator question. So a cascade of common source amplifiers. So there are so many things which are contradictory in this question. First thing is common source amplifiers. So he is not telling how many amplifiers are cascaded. Okay, this is the first question. Okay, and unity gain feedback configuration oscillates when? Now the answer provided by IIT is Delhi. In Delhi, it is in D option, it is given that the closed loop gain is greater than 1. Actually, in oscillator, the closed loop gain should not be greater than 1. Because the A beta, the open loop gain, A beta has to be greater than 1. If you remember this Bach-Hussain criteria, then according to Bach-Hussain criteria, A beta has to be greater than 1. Okay, and in this, it is written closed loop gain. Now, there can be one argument, and that argument is, we know that, sir, in oscillator, closed loop gain has to be infinite, and infinite is always greater than 1. So you can take it a logic. So you can take that closed loop gain is greater than 1, because in a oscillator, the closed loop gain has to be infinite. So greater than 1 is a subset of infinite. So you can't claim on that. But look at the next part. The phase shift is greater than 180 degree. That is not correct. Okay. The phase shift, I mean, you are not sure how you are looking the phase shift, because if you are looking the A beta, and then the A beta, the phase shift has to be 2n pi in open loop system, and in closed loop system, there should not be any phase difference. Okay. I hope it is clear, guys. I hope you understood this. So again, this question has to be marks to all. Okay. This question has to be marks to all. Okay. So let's come to the next question. I think Rakesh Sir will continue from this question. This is IN question, instrumentation question. So Rakesh Sir, I want you to continue from this point.
All right. So guys, coming to this IN question, have a look into this. The phase margin of the transfer function 2 1 minus s upon 1 plus s whole square is equal to dash degree. The answer given by IIT is -2. This is the question number 50. And now, dekho, what is the contradiction I'll tell you in this question? Okay. What is the contradiction I'll tell you in this question? Just a second. Right. Now, since this is a non-minimum phase transfer function, the loop that is given to you is representing a non-minimum phase system. Okay, non-minimum phase system. Now, there is a statement in BC Kuo, the very, very famous book for control system. There is a statement which clearly says that if it is a non-minimum phase system, the gain crossover frequency can exist in any of the 4 coordinate axes. 4 matlab including positive, negative as well. But the formula for phase margin, that is 180 degree plus angle Gj omega g Hj omega g, does not exist for non-minimum phase systems. For non-minimum phase system, the formula 180 degree plus angle Gj omega g Hj omega g does not exist. Okay, this is a slight data that you must take care. Okay, no problem. But then what to do? Okay, so what we have done is we have even taken the polar plot for this. Approximately, guys, aap log aaram se pura bana lena. I'll just give you the direct answer that this is how approximately the polar plot is going to come. This is the 0 plus, this is going to be the infinity plus, and this is the frequency √3, where you cut the negative x-axis, and at that magnitude and at that frequency, it is crossing the -1, 0 point. Exactly, it is crossing the -1, 0 point. And even if you take the characteristic equation, guys, simplify the characteristic equation, wo kitna aa jayega? 1 from here and 2 from here. S square plus 3 equal to 0. 2s and -2s got cancelled. This also says that the system is marginally stable, right? And even if you look into the polar plot, it is exactly crossing at omega equal to √3, that is why it becomes gain crossover frequency. At the omega equal to √3, it is crossing the -1, 0 point, and hence it is clearly marginally stable. Here also it is seen. So even if you give it a slight shift, suppose you give a clockwise rotation, right? If you give it a clockwise rotation, then definitely it is going to become unstable. Already it is the marginally stable case. So even by looking into the polar plot, it is 0 degree. It is 0 degree. Okay, this can be challenged. Just to verify it more, I will add on to the data. So now see this. This is the data that is officially obtained. Now, using the MATLAB, अब आप इसमें देखेंगे, what is the answer that you're able to see here? Okay, using the computing tool as well, the answer that is coming up is phase margin for the system -2s plus 2 upon s square plus 2s plus 1 is 0.0022. It is 0.0022. This is the answer given. This is just as good as 0 only. This is the answer given by MATLAB. Right. So hence, guys, this question should be challenged, and the answer for the question has to be 0 degree. -2 nahi hoga. -2 nahi hoga. Now, guys, if you have solved by formula also 180 degree plus angle Gj omega g Hj omega g, still it is coming to be 0. But actually for non-minimum phase systems, we should be careful that phase margin formula does not necessarily apply there. But eventually answer 0 aaya, you can challenge this question. Okay, you have to challenge this question. Moving ahead to the next question now, doubly. There is nothing wrong with this question, guys. Doubly pe bhi aa jate, guys. There is nothing wrong with the question, but in the following differential equation, okay, the numerically obtained value of yt at t equal to 1. The numerically obtained value, numerically kaise obtain karenge? By numerical methods obtain karenge. Okay, numerical methods. And if I talk about numerical methods, it has gone out of syllabus for EE. It is out of syllabus from GATE 2021 onwards. GATE 2021. You know, IIT Bombay updated the syllabus last in the GATE 2021. Uske pehle hota tha EE mein. Right, maybe that point was missed by IIT Kanpur. Usse pehle hota tha, right? But this is out of syllabus. Now, we are not really sure that whether IIT is good, because, you know, we can only challenge IIT, we can only request them, but what ultimate decision will be theirs, right? So, 90% they should agree. Pehla hua bhi hai, very rarely it has happened, but it happens. So, guys, if you all post it as challenge, maybe they're going to, you know, definitely expect this, because jab syllabus mein nahi hai, itni sari cheezein padhne ko already hota hai, to why a student will focus out of syllabus? It is by chance somebody already had studied this for any other exam, so they remember it. Okay, so actually it is out of syllabus. So this question can be challenged. Otherwise it is very simple. ठीक है, but syllabus में नहीं है, इसलिए इसको बस इतना से mention करना है. Same next. Okay, the straight line fitting using the least square method. This is again
out of syllabus for EE, guys. You can try to challenge this. Okay, definitely you should try to challenge. Official answer, jo bhi given, telling you there is nothing wrong with the question. There is nothing wrong with the answer key as well. But the point is it is out of syllabus. And one more thing, similarly, it is a question from microcontroller. पहले भी microprocessor होता था. Microcontroller was not a part, but even microprocessor is removed, right? And they have given some flags. So guys, we all, microprocessor पढ़ा तो ये पता होगा what is carry flag, auxiliary carry, overflow parity. Even if you have studied microprocessor earlier, it is not in GATE syllabus now. But the general purpose microcontroller, what is the flag pattern CAOP? If you have not studied, you will not know it. And because it is out of syllabus, why will you study it? Okay, so this again goes as out of syllabus. Official answer 2 given hai, but I'm not talking about the correctness or the incorrectness of the question. It is out of syllabus. This can be challenged. This can be, I think you all must definitely challenge. These have to be MTA. And look into it. It is a 2-marker question as well. So definitely look into it, guys. It's out of syllabus. Microcontroller kabhi GATE ke EE syllabus mein nahi raha hai. Okay, guys. So this is the one. Okay. And now this is already. Now I think, mere hisab se, for the first time, in the first answer key given by IIT Kanpur, initially only they have given MTA. Official answer key mein MTA given hai. Shayad aisa pehli baar hua hai. Before challenge is opened only, the official answer is given by MTA. You must have seen this. We have discussed this earlier also, guys. Nothing. What is the problem with the question? Electric and magnetic field data bol raha hai. Point to the X and Z respectively. Matlab electric field point to X, magnetic field B point to the Z direction. Okay, but the figure mein kya given hai? Electric field is seen pointing towards Z and magnetic field is seen pointing towards B, pointing towards the X direction, magnetic field B, and that is why this question already awarded by the IIT as MTA. That is why no need of any discussion. Ye question to khatam hi ho chuka. It is marks 2 all for all. It is marks 2 all. Right. Now, Ashutosh sir and Ashu sir, once again over to you for EE core questions. Students are waiting for power system and machines questions. So Ashutosh sir is here once again, and Ashu Jhangra sir will also join, sir. Your opinion on the next questions? Yeah, thank you so much, sir. So we have 2 questions from power system, which me and Ashu sir is going to discuss, and it's just that we want to convey the same message to all of you, because these 2 questions we are discussing since GATE exam was conducted. I think almost every night, me and Ashu sir, we are discussing on these questions. What are the different possible dimensions? So, sir, this relay question we were discussing. Sir, first, if you allow me, I will give my point of view here, Yes, and then I will of take course, your of point course. also. Yes, sure, Sir, sir, sure. this relay question, he is basically talking about that what is the minimum number of directional relays which are going to be used, and the options are quite confusing. Options are quite confusing. Why options are confusing? Because number of times you have seen the question. I'm not going to read the question. I hope you understand this question, what I'm going to talk about. So if you see, the option given by IIT is A option. The option given by IIT is A option, which says R3 and R4 are directional overcurrent relays. Now the confusion is on this statement, this word blocking. Blocking faults and towards bus number 2. Now please try to understand. There is no confusion about this network, that the relays at B3 and B4 positions are going to be directional relays, whereas the other relays are going to be non-directional. There is no confusion on this issue. The confusion is on the issue that whether this blocking fault towards 2 is correct, or as the answer given by us, that is Ashu sir and me, that D should be the correct answer. Let us try to understand. First, I am discussing that what is the meaning of block. If you talk about a relay, so relay has basically 2 operations. First one is to trip, and the second one is to block. When we talk about tripping of the relay means the relay is going to send a tripping signal to the circuit breaker so that the circuit breaker contacts are starting to open. So this condition will happen when there is a fault condition. So tripping will always relate to the fault condition. When the relay is going to be in the block condition, when there is going to be a transient or power swing. Because we do not want our relay to operate when there is a transient or power swing, which is not actually a fault condition. It is just an abnormal condition for a very small period of time, which is not going to affect the system.
in a significant manner. So these conditions we want the relay to block. Now please understand the statement mentioned in this option number A is given as that R3, R4 are directional overcurrent relays blocking fault towards bus number 2. Now this is not correct because blocking fault does not have a logic. The purpose of relay is to operate when there is a fault. This is the purpose of the relay. Sir, Ashu sir, so I want you to just enlighten or tell something about this. What is the nature of this term towards bus number 2? जी sir, actually I want to speak in Hindi so that I can No tell issue, you no issue, sir, no issue. in a fine way. So प्रॉब्लम क्या है सर इसमें? प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि B3 B4 मेरी डायरेक्शनल रिले है, ये तो हर ऑप्शन में दे रखा है। नाउ अगर ये ए ऑप्शन को सही बोल रहा है तो डी को तो सही मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे दो दिक्कतें मेरे को नजर आती हैं, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स मुझे फेस होती हैं ए ऑप्शन में। द फर्स्ट थिंग इज इफ यू लुक एट द ऑप्शन, इस ऑप्शन में ये जो ब्लॉकिंग वर्ड है, ये ब्लॉकिंग वर्ड मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट इसको स्टेटमेंट को सीधा पढ़ते हैं तो R3 R4 आर डायरेक्शनल ओवर करंट रिले ब्लॉकिंग द फॉल्ट टुवर्ड्स बस 2। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ गई हैं। दो प्रॉब्लम कौन सी है? एक तो टुवर्ड्स बस 2 है, ये बस 2 की बात नहीं कर रहा है, टुवर्ड्स बस 2 की बात कर रहा है। टुवर्ड्स बस 2 आपका ये जोन भी है और ये जोन भी है, ये भी टुवर्ड्स बस 2 है और ये भी टुवर्ड्स बस 2 है। इसका मतलब ये होगा कि B3 और B4 जो है वो ब्लॉकिंग द फॉल्ट, ब्लॉकिंग को एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि सर ये ट्रिपिंग का ऑपोजिट है। अगर एक मिनट के लिए ब्लॉकिंग को हम ट्रिपिंग का ऑपोजिट मान भी लें, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजिंग है। यहां पे देखो, अब यहां पे लिखा हुआ ब्लॉकिंग फॉल्ट, इसका मतलब ब्लॉकिंग फॉल्ट का मतलब है ये ट्रिप नहीं हो रही है, सॉरी ये फॉल्ट के टाइम ट्रिप हो रही है। ब्लॉकिंग फॉल्ट का मतलब है जब फॉल्ट होगा तो ये ट्रिप हो जाएगी, तभी तो फॉल्ट को ब्लॉक करेगी। इसका मतलब समझिए, ब्लॉकिंग द फॉल्ट का मतलब ये हुआ, ब्लॉकिंग द फॉल्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे ही फॉल्ट होगा तो ट्रिप मारेगी। इसका मतलब सेफ कर रही है, ये सेफ रीजन प्रोवाइड कर रही है, ब्लॉकिंग फॉल्ट का मतलब। लेकिन एक मिनट के लिए अगर मैं मान लूं कि ब्लॉकिंग जो है ट्रिपिंग के रेफरेंस में यूज किया गया है, कि भाई जो ये मेरी डायरेक्शनल रिले हैं और ये क्या कर रही हैं, ये मेरी ट्रिपिंग करेंगी, ये मेरी ट्रिपिंग होगी। अगर मेरा फॉल्ट कहां पे हुआ? टुवर्ड्स बस 2 हुआ, तो टुवर्ड्स बस 2 तो इधर भी है, बस 2 इधर भी है, यहां पे ये दिक्कत आ गई है। तो ये तो डायरेक्शनल रिले है भाई, ये तो डायरेक्शनल रिले है, आप जानते हो ये तो डायरेक्शनल रिले है, तो ये दिक्कत आ गई यहां पे। अब यहां पे ये गड़बड़ है दोस्तों, आप समझ रहे हो। डी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है R3 R4 आर डायरेक्शनल ओवर करंट रिले ब्लॉकिंग फॉल्ट टुवर्ड्स लाइन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये डायरेक्शनल रिले होनी चाहिए और ये क्या होनी चाहिए? ब्लॉकिंग द फॉल्ट। ब्लॉकिंग द फॉल्ट का मतलब क्या हुआ? अगर फॉल्ट होगा तो उस टाइम में ट्रिप करेंगी। अगर वो कहां पे फॉल्ट होगा? लाइन 1 एंड लाइन 2 पे होगा। अगर लाइन 1 या लाइन 2 पे फॉल्ट होगा तो ये ट्रिप करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट अगर आप इसमें देखें, इस ब्लॉकिंग को अगर आप देखें कि इसको ट्रिपिंग के रेफरेंस में अगर आप यूज करें, क्योंकि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं ना कि सर एक ब्लॉकिंग जोन है, एक ट्रिपिंग जोन है, तो ब्लॉकिंग जोन में तो क्या होगा? रिले ऑपरेट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि टुवर्ड्स बस 2 अगर है तो ये रिले जो है ये ब्लॉक करके रखेगी, ये ब्लॉकिंग करेगी, फॉल्ट को ब्लॉक करेगी। ये तो इसका मतलब तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि अगर इसकी तरफ फॉल्ट हो रहा है, इसकी तरफ फॉल्ट हो रहा है, इसके टुवर्ड्स बस 2 फॉल्ट हो रहा है तो ये ब्लॉक करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा सर। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है। और अगर आप इसको ध्यान से सोचे तो अगर ए को सही बोलते हो तो डी को तो फिर बोलना ही पड़ेगा। अब ये एमएसक्यू तो है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दिक्कत है, इसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है स्टेटमेंट। अब इसको हम पूरी तरह से आपको लिख के दे देंगे कि कैसे इसको आप चैलेंज करें, वो पूरा आपको पीडीएफ में हम लिख के देंगे इसमें क्या दिक्कत है और हर एक लेटर का क्या मतलब है। क्योंकि जब आप पूरी लाइन को पढ़ रहे हो तो इसका मीनिंग ही एक डिफरेंट निकल के आता है। आशुतोष सर, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं दोस्तों कि जो सर ने बात बोली है डी ऑप्शन के बारे में, सॉरी ए ऑप्शन के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्लॉकिंग फॉल्ट्स टुवर्ड्स बस नंबर 2, तो डेफिनेटली इसमें दोनों लॉजिक जो सर बोल रहे हैं आ जाएंगे कि टुवर्ड्स बस नंबर 2 इस साइड से भी हो सकता है, टुवर्ड्स बस नंबर 2 इस साइड से भी हो सकता है। बोथ द साइड्स इट इज पॉसिबल टुवर्ड्स बस नंबर 2. Now the fault can be on line 1 also, 2 also and 3 also. Now please try to understand, if there is a fault on line 1, then R3 R4 being the directional, अगर R3 R4 डायरेक्शनल है और फॉल्ट लाइन 1 पर होता है, सपोज यहां पर फॉल्ट हो गया, तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना जरा, जो ये फॉल्ट करंट है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है। मतलब B3 में
करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो B3 ऑपरेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लाइन 2 में फॉल्ट कराते हो तो B4 में जो रिले है R4 वो ऑपरेट हो जाएगा। बट अगर लाइन 3 में फॉल्ट हुआ टुवर्ड्स बस नंबर 2, तो B3 B4 कैसे ऑपरेट करेंगे? क्योंकि करंट का फ्लो का डायरेक्शन तो सेम है, रिले के सेंसिंग डायरेक्शन में तो है नहीं, तो B3 B4 फिर ऑपरेट नहीं करेंगे। तो फिर ये कैसे फिर ब्लॉक कर रहा है? मतलब दो जगह पर रिले ऑपरेट कर रही है और एक जगह पर नहीं कर रहा है। तो 100% मेरे हिसाब से तो सर ए ऑप्शन किसी भी पॉसिबिलिटी से करेक्ट हो ही नहीं सकता है। अगर हम ब्लॉक नहीं, मेरे हिसाब से भी सर डी आंसर जो हमने दिया है, और डी आंसर मुझे लगता है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है अगर ए के कंपैरिजन में देखें तो। जी सर, डेफिनेटली सर। सो सर वी कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन। तो सर हमारी तरफ से इसका ऑप्शन होगा डी। हाँ, और so जैसा कि सर बोल this रहे हैं question, कि guys. इसको कैसे चैलेंज करना है वो हम आपको बताएंगे, कैसे उसको आंसर फ्रेम करना है। सर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, वाई बस वाले पे। यस सर। सर वाई बस वाले में तो मुझे लग रहा है कि अगर ये सेशन इनफाइनाइट टाइम के लिए भी चले तो मुझे लगता नहीं कुछ खास कंक्लूजन उसमें निकल पाएगा, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं सही हूं, फिर आप बोलोगे तो मुझे लगेगा कि आप सही हो। तो कुछ इस तरीके का इसमें कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों। सर मैं थोड़ा सा एक इनिशिएट कर रहा हूं, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। जी सर, आप एक बार कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं एक छोटा सा सर डायग्राम बना देता हूं जिससे रेफरेंस हो सके। हो सकता है कुछ बच्चों ने नया ध्यान से देखा हो। तो दोस्तों इसमें 3 बस सिस्टम है, इट इज अ 3 बस सिस्टम। एंड if we take the general case, suppose we take the general case that all the buses are having shunt element. Bus number 1, bus number 2, bus number 3. This is bus number 1, this is bus number 2, this is bus number 3. And all the buses, all the lines are having line charging capacitance also. This is what I am assuming in the starting part of discussion. अभी आशु सर भी इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक देने वाले हैं। मैं भी थोड़ा सा सर चकरा गया था, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। 15-20 मिनट के लिए लगता था कि ये सही है, फिर लगता था ये सही है। एनीवेज लिसन, अब ये इस पे मैंने पहले एक सोल्यूशन डिस्कस किया हुआ था, तो इसको हम बोल देते हैं y चार्जिंग 1 to 2 by 2, y चार्जिंग 1 to 2 by 2, y चार्जिंग 2 to 3 by 2, y charging 2 to 3 by 2, y charging 3 1 by 2, y charging 3 to 1 by 2. This is y12, y23, this is y31. This is shunt element y10, y20 and this is y30. ये हमने एक जनरल केस ले लिया था क्योंकि इसमें हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको जब आप इस वाई बस के डिफरेंट डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट से कंपेयर करोगे, इक्वेशंस फाइनली फाइंड आउट करोगे। ऑलरेडी हम इसको 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो जो आपके पास फाइनल कंक्लूजन आ रहा है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहला कंक्लूजन ये आया था y10 प्लस y चार्जिंग 13 by 2 प्लस y चार्जिंग 12 by 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनकर आई थी। इस इक्वेशन को अगर आप देखो और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है नो शंट इंडक्टर कनेक्टेड एट एनी ऑफ द बसेस। सो इट मींस इफ वी टॉक अबाउट एडमिटेंस, if there is a reactor present then admittance can be negative, but admittance cannot be negative for capacitance. So all 3 terms here are going to be positive. It cannot be negative. So no reactor is present. It means this condition is only possible when individually this is also 0, this is also 0, and this is also 0. This is first conclusive statement we have got. So this is equation number 1. The second equation we have got was y20 plus y charging 23 by 2 is equal to j 0.5. And third equation we got was y30 plus y charging 2 to 3 divided by 2 is equal to j1. ये तीनों इक्वेशन हमारे पास आई थी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन था वो ये था कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। तो ये बात तो तय है, which of the following statement cannot be true will include those statements which have no possibility to be true at all. Because if one possibility is there that they can be true, then they will not fall in our answers, because which can never be true, it means which is 100% false. So we have to identify the statements which are 100% false.
अभी आशु सर का भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक आने वाला, बहुत क्लासिकल, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा था क्लासिकल क्वेश्चन फ्रॉम पावर सिस्टम. Now, if you talk about the statement A, it says line charging capacitor of finite value is present in all three lines. Now, let us try to understand. We are saying 100% confidence that charging capacitance for line 1, 3 and 1, 2 are 100% zero. We are not talking about 2 and 3, but we are talking about 1, 3 and 1, 2. So, statement 1 is 100% false category. 100% false category. Let us talk about option B. Option B says line charging capacitor of finite value is present in line 2, 3 only. Now, please try to understand. There was also confusion. I was saying that B should also be incorrect. Why? Because if you see option number, equation number 2, Y2 naught plus Y charging 2, 3 by 2 is equal to J 0.5. It has infinite possibility. It has infinite possibility. One possibility among those infinite possibilities is that Y2 naught, sorry, Y charging 2, 3 may be 0 and Y2 naught is J 0.5, or Y2 naught is 0 and Y charging 2, 3 by 2 is J 0.5. Now, if you talk in terms of the possibilities, then there is one possibility which says that line charging capacitor of finite value is present in line 2, 3 only. But where is the problem? The problem is on one end you are talking about, on one end you are talking about cannot be true, and on the other hand you are putting only. Now the problem is when you say only, what is the meaning of this term only? How much I can understand, जितना मुझे समझ में आता है only का मतलब क्या है? When you say only, when you add this adjective, you can say it means only one condition is possible, other conditions are not possible. Now this was the most important confusion, because other infinite possibilities are also there. It means individually, if you see this question, this statement that line charging capacitor of finite value is present in line 2, 3 only, it is true for one case. But why you are not talking about other cases? Are you getting this, everybody? But if you see in terms of equation number 1, with 100% surety, you can say for 1, 3 and 1, 2, line 1, 3 and line 1, 2, 100% confidence, line charging is 0. So if at all line charging can be present, it can be present in 2, 3 only. From this logic, B may have a possibility to be true, because there is a condition that charging 1, 3 and charging 1, 2 is 0. So B is going to be having a possibility that it can be true. So this is not going to be our answer. I hope you are getting this. Let us come to statement C. Line charging capacitor of finite value in present in line 2, 3 only, and shunt capacitor of finite value is present in bus 1 only. Now here we have the same case. Line charging 2, 3 present in 2, 3 only, this is correct. But when you say the shunt capacitor of finite value is present in bus 1 only, now this is 100% incorrect. Why? Because Y1 naught is conclusively made that it is 0. Y1 naught cannot have any other value. It means no shunt element is connected to bus number 1. So this is 100% false category. This is 100% false category. So you can understand C is also going to be the one of the incorrect option. If you talk about option D, now option D, I will give you my view, and then I will invite Ashu sir to present his view so that you can compare it. Option D is saying line charging capacitance of finite value is present in line 2, 3 only. This is correct. And shunt capacitor of finite value is present in bus 3 only. So come to this equation number 3. Equation number 3, you can have infinite possibilities. When you say, suppose Y23 is having some value and Y3 naught is having some value, and together they are giving you J1. Now there is a possibility that Y3 naught may be 0. Yes or no? And only line charging is present for section 2, 3, that is contributing towards the, you can say, shunt capacitance. This may be 0. So on the basis of this can be wrong also. And we have to choose the incorrect statement. There is a possibility that this may be one of the possibility among infinite possibility, but whether it will be true
in terms of rejecting other possibilities, this is not clear. So Ashu sir, just put your views also. Otherwise, I think students will feel quite confused. Sure, sir. Sure. Thank Over to you you, sir. for your nice explanation, sir. And guys, मेरा क्या perspective है इसमें? Let me tell you, because मैं एक different तरीके से सोचता हूँ. Cannot be true. Cannot be true means 100% false. It has to be 100% false. 100% false. Okay. Now, if you look at the Y bus. In the Y bus, you can prove that there are 3 buses that Ashutosh sir has already told you. So let me redraw that circuit, and let me tell you again some basic point. Okay, now this is bus 1, this is bus 2, and bus 3. So according to the Y bus, we have found that on bus number 1 there is no shunt and charging capacitance. If there is no shunt and charging capacitance, then you can say कि यहाँ पे हमारे पास कोई शंट कैपेसिटेंस नहीं है, तो अगर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पे भी नहीं होगा, लाइन नंबर 2 पे भी नहीं होगा. सो इट मींस शंट कैपेसिटेंस इस लाइन में नहीं आएगा और ना ही इस लाइन में शंट कैपेसिटेंस आएगा, बिकॉज shunt capacitance नहीं, charging capacitance. Let me again tell you the same point, charging capacitance. So क्योंकि Y11 पे कुछ नहीं है मेरे पास, Y11 का सम जो है वो 0 बन रहा है, इसका मतलब Y11 पे ना ही चार्जिंग कैपेसिटेंस है ना ही कोई शंट कैपेसिटेंस है. अगर कोई चार्जिंग कैपेसिटेंस नहीं है लाइन 1 पे, तो चार्जिंग कैपेसिटेंस तो हमेशा Y इक्विवेलेंट नेटवर्क हम लोग दिखाते हैं, तो Y इक्विवेलेंट में या पाई इक्विवेलेंट आप बोल दीजिए, पाई इक्विवेलेंट में हम जो दिखाते हैं, तो पाई इक्विवेलेंट में इधर अगर आप चार्जिंग कैपेसिटेंस दिखाओगे तो इधर भी दिखाओगे, जब इधर कोई है ही नहीं तो इधर भी नहीं दिखाओगे आप. तो इसका मतलब लाइन नंबर 1, 2 और लाइन नंबर 1, 3 में कोई चार्जिंग कैपेसिटेंस नहीं आएगा. आपका ये जो चार्जिंग कैपेसिटेंस है जिसको आप पाई नेटवर्क से दिखाते हो, तो इसको मैं ग्राउंड कर देता हूं, ये नहीं आएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. सिमिलरली यहाँ पे ये जो था ये, और यहाँ पे ये जो था ये दोनों ही कैंसिल हो गए. ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास चार्जिंग कैपेसिटेंस प्रेजेंट होगा, इन केस अगर हुआ, तो वो केवल और केवल लाइन 2, 3 में ही होगा. ठीक है, लाइन 2, 3 में ही होगा. अब लाइन 2, 3 में अगर आप ध्यान से देखें, लाइन 2, 3 में ही होगा. ओके, अब लाइन 2, 3 में एक शंट कैपेसिटेंस भी हो सकता है, चाहे तो बस नंबर 2 पे हो, चाहे वो बस नंबर 3 पे हो. अब अगर आप देखें तो पहला पॉइंट समझिए, पहला ऑप्शन समझिए, द लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन ऑल लाइन. ये ठीक है, मतलब ये गलत है, क्योंकि लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस हर लाइन में नहीं प्रेजेंट है, खासकर 1, 2 एंड 1, 3 में नहीं है. ठीक है, लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस, तो ये तो आपका मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ना ही कोई सी पे डाउट है. क्यों? क्योंकि लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन लाइन 2, 3 ओनली. 2, 3 ओनली में ही लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस होगा. And the shunt capacitance of finite value is present in bus 1 only. तो 1 में तो कुछ नहीं होगा भाई, बस में तो बस नंबर 1 पे ना तो कोई शंट कैपेसिटेंस हम लोग लगाएंगे, और चार्जिंग तो वैसे भी नहीं है क्योंकि टोटल सम जो है वो 0 बन रहा है, आप लोग जानते हो. इट मींस सी पे भी कोई गिला शिकवा है ही नहीं, सी ऑप्शन भी मेरा करेक्ट है. नाउ लेट्स कम टू द डी ऑप्शन एंड बी ऑप्शन. In B option, the line charging capacitance of finite value is present in line 2, 3 only. जो line charging capacitance होगा finite value का, वो केवल line 2, 3 only में ही होगा. That's again, मतलब ये सही स्टेटमेंट है, it can be true. क्योंकि अगर line charging capacitance अगर कहीं हुआ तो वो 2, 3 में ही हो सकता है. हालांकि जरूरी नहीं है कि जो लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस आ रहे हो आप उनको शंट कैपेसिटेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, आप इनको 0 भी मान सकते हो दोस्तों, और इन दोनों को आप क्या ले सकते हो, शंट कैपेसिटेंस की तरह भी मान सकते हो. भाई ऐसा तो मेंशन नहीं है, डायग्राम तो मेंशन नहीं है, तो आप जो ये चार्जिंग कैपेसिटेंस की 0 वैल्यू ले लो और इनको दोनों को शंट कैपेसिटेंस आप मान सकते हो. दैट्स अप टू यू. बट इन केस अगर लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस हुआ तो वो लाइन 2, 3 में ही होगा. इसका मतलब जो 2, 3 ओनली लिखा है ये विद रिस्पेक्ट टू लाइन 1, 2 या 1, 3 के रेस्पेक्ट में लिखा गया है कि उनमें नहीं होगा. अगर हुआ तो वो केवल और केवल किस में होगा, लाइन 2, 3 में होगा. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हम लोग नहीं काउंटर कर रहे हैं. बट लुक एट दिस, यहां पे ये गड़बड़ कर रहा है. अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, और क्या कंफ्यूजन है, द लाइन चार्जिंग कैपेसिटर ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन लाइन 2, 3 ओनली. दैट्स करेक्ट. लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस होगा वो 2, 3 ओनली में ही प्रेजेंट होगा अगर हुआ तो. And
shunt capacitance of finite value is present in bus 3 only. बस 3 ओनली, ये कह रहा है कि जो शंट कैपेसिटेंस होगा वो बस 3 ओनली में होगा। शंट कैपेसिटेंस जो होगा वो बस 3 ओनली में होगा। अब यहां पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बस 3 ओनली बोलने का मतलब यह है कि बाकी बसेस में होगा ही नहीं। बस 3 ओनली ये कह रहा है। अब यहां पे कई पर्सपेक्टिव है, लोगों के देखने के नजरिए अलग अलग हैं। वो कह रहे हैं कि लाइन कैपेसिटेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन बस 3 ओनली। इट कैन नॉट बी ट्रू। मैं ये बोल रहा हूं कि इट कैन नॉट बी ट्रू, ये ट्रू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि और भी मल्टीपल केसेस हैं। आप बोलोगे क्या ये 100% फॉल्स है? हाँ, ये 100% फॉल्स स्टेटमेंट है। व्हाई इट इज 100% फॉल्स? बिकॉज आप जब ओनली वर्ड लगा देते हो, इट मींस यू आर नेग्लेक्टिंग ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज। हाँ, आप ये लिख सकते थे इसमें, इसको करेक्ट अगर मैं लिखता विच कैन बी ट्रू, जिसको मैं बोलता लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन 2, 3 ओनली एंड the shunt capacitor of finite value may be present in bus 2 and bus 3 only. That may be correct. वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती, मतलब वो फिर आपकी इस तरह से। बट अगर आप लाइन 3 ओनली बोल देते हो, लाइन 3 ओनली बोलने का मतलब दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज 100% फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज आप बाकी लाइन की पॉसिबिलिटी को खत्म कर रहे हो। आप बाकी लाइंस की पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर रहे हो। बट इसका एक काउंटर क्वेश्चन भी है। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर आप इसको अलग तरह से देखिए, इसको आप इस तरह से देखिए कि लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन, एक बार मैं फिर से चल रहा हूं, इट कैन बी ट्रू। अगर मैं दूसरे सेंस में देखूं, मैं इसको कैन बी लगा के बोल रहा हूं, इट कैन बी ट्रू दैट द लाइन चार्जिंग कैपेसिटर ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन लाइन 2, 3 ओनली एंड शंट कैपेसिटर ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन बस 3 ओनली। इट कैन बी ट्रू। तो आप देखो, अब आप बोलोगे सर कैन बी तो कैन नॉट बी का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो अगर यहां पे कैन बी बिल्कुल सही स्टेटमेंट बना रहा है कि इट कैन बी ट्रू दैट द लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन 2, 3 ओनली एंड द शंट कैपेसिटेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन बस 3 ओनली, इफ दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, तो इसका मतलब ये कैन नॉट बी ट्रू में तो आना नहीं चाहिए। बात तो सही है, बट एक बार आप इसको दूसरे एंगल से मत देखिए। एक बार आप इसको केवल कैन नॉट बी ट्रू से ही देखिए। क्या आप ये 100% फॉल्स बोल सकते हो? क्या ये स्टेटमेंट 100% फॉल्स है? बिल्कुल 100% फॉल्स है। बिकॉज अगर आप इसको, मैं ये बोलूं इट कैन नॉट बी ट्रू दैट द लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन 2, 3 ओनली एंड शंट कैपेसिटेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यू इज प्रेजेंट इन बस 3 ओनली, इट कैन नॉट बी ट्रू। क्यों? क्योंकि बस 3 ओनली बोलने का मतलब क्या है? बस 3 ओनली बोलने का मतलब है कि आप बस 2 को नेग्लेक्ट कर रहे हो। बस 2 में तो हो सकता है ना शंट कैपेसिटेंस, तो आप बाकी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर रहे हो यहां पे, और बाकी पॉसिबिलिटीज को खत्म करने का मतलब अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट होता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, लेट्स गिव वन मोर एग्जांपल। और वो एग्जांपल क्या है? सोचिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं पूरे इंडिया में इकलौता इलेक्ट्रिकल का टीचर हूं या इकलौता इलेक्ट्रिकल का बेस्ट टीचर हूं, ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स 100% फॉल्स स्टेटमेंट। आप इसको नहीं कह सकते। ओनली वर्ड लगाना और कैन भी लगाना, एक तो कैन लगा रहे हो, एक ओनली भी लगा रहे हो, तो वो अल्टीमेटली मस्ट की फॉर्म ले लेता है कि केवल वही एक सिचुएशन होगी। आप समझिए, यहां पे ये मुझे टेंशन में दे रहा है। तो मैं इसको चैलेंज की तरफ लेके जा रहा हूं और मैं इसको पूरा आपको लिख के भी दूंगा कि क्या इसमें दिक्कत आ रही है मुझे। ठीक है, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। यहां पे जो बस 3 ओनली लिखा है, बस 3 ओनली का मतलब है आप बाकी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर रहे हो। इट मींस बस नंबर 2 पे भी तो पॉसिबल है ना। अगर बाकी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर रहे हो तो इसका मतलब है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है, क्योंकि और भी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो यहां पे ये दिक्कत है। यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे भी तो ओनली लिखा हुआ है, यहां पे कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस कहीं हुआ तो लाइन 2, 3 में ही होगा, यहां पे और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहां पे 1, 2 या 1, 3 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दैट्स व्हाई मैंने इसको नहीं काउंट किया अभी, बट मैं स्टिल इसको काउंट कर रहा हूं। दिस कैन नॉट बी ट्रू, मैं ये बोल रहा हूं। तो आप इस पॉइंट को समझिए कि अगर यहां पे ओनली है तो यहां पे भी ओनली है, बट यहां पे ओनली का अलग मीनिंग आ रहा है, यहां पे ओनली का अलग मीनिंग आ रहा है। तो ये एक लैंग्वेज का क्वेश्चन बन गया है, सही बताऊं तो। अब इसमें अपना अपना राय है, अपना अपना व्यूज है। ठीक है, सो आप जो है इसमें मतलब अपने लॉजिक्स भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट को इस तरह से दिखाया गया है या बोला गया है कि वो कैन बी ट्रू भी हो सकता है और कैन नॉट बी ट्रू भी हो सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम।
दोनों ही हो सकते हैं। तो ये कई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज की बात आ गई है, तो मेरे हिसाब से डी आंसर जो है वो भी इसका करेक्ट होना चाहिए, मतलब कैन नॉट बी ट्रू में आना चाहिए, बिकॉज इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपने ओनली वर्ड लगा दिया, ओनली वर्ड मींस आप बाकी पॉसिबिलिटीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो, जबकि पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पे बस नंबर 2 पे भी आपके शंट कैपेसिटेंस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होता कि प्रेजेंट इन लाइन 2 3 ओनली एंड द शंट कैपेसिटेंस ऑफ फाइनाइट वैल्यू मे बी प्रेजेंट इन बस 2 एंड बस 3 ओनली। ठीक है, वो फिर ज्यादा सही रहता। अकेला बस 3 ओनली करने का मतलब आपने स्पेसिफिक कर दिया है उस चीज को। दैट्स वाई मेरे हिसाब से ये गड़बड़ जा रहा है। इसको मुझे क्लेम के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको जरूर क्लेम करें। अगर नहीं मानता आईआईटी, नो प्रॉब्लम, मतलब ए एंड सी तो फिर उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, बी मेरी तरफ से मैं बोलूंगा कि भाई बी जो है इसको तो आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसमें जो रेफरेंस है वो 2 3 का ले रखा है और 1 के रेफरेंस से 1 1 2 और 1 3 के रेफरेंस से बोल रहा है, तो ठीक है 1 2 या 1 3 में नहीं होगा। अगर लाइन चार्जिंग कैपेसिटेंस कहीं हुआ तो 2 3 में ही होगा। दैट्स करेक्ट। ठीक है, बट डी ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। तो अगर हल्का सा भी डाउट है तो हम क्यों पॉसिबिलिटी दें, हमें चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको जरूर चैलेंज करें इस क्वेश्चन को, एंड मैं भी इसको करूंगा। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे अलाउ किया और किसी का ए सी डी आंसर अगर है, 1 2 स्टूडेंट है जिन्होंने किया है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके अकाउंट से इसको क्लेम किया जाए, एंड उसका मैं प्रॉपर एक तरीके से एक लैंग्वेज के फॉर्म में एक मैथमेटिकल प्रूफ के हिसाब से इसको हम लिख के और इसको क्लेम करेंगे। ओके, सो yes, it's based on language. This question is purely based on language. So let's come to the next question, guys. So again, ये मशीन का क्वेश्चन है, और इस मशीन के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में चैलेंज करने लायक कुछ नहीं है। इसका 1.58 आंसर दिया है, एंड दैट इज करेक्ट। 1.58 करेक्ट है, बिकॉज इसमें जो मोटर की जो पी आउट की जो कंडीशन होती है उसको आप मैक्स कीजिए। यहां पे अब एक डाउट है, उसको मैक्स कर दीजिए, और उसके हिसाब से जब आप ईएफ को कैलकुलेट करेंगे तो 1.58 ही आएगा। उससे एक मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बन जाएगी, और अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रही है तो सीधा सीधा उससे ईएफ की वैल्यू 1.58 आ जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पे आपको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ईएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वीटी की वैल्यू गिवन नहीं है, नॉट गिवन है। ठीक है, अगर ये वैल्यू गिवन नहीं है और ये अगर पर यूनिट में दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी को तो बेस माना होगा, उसी के रेस्पेक्ट में पर यूनिट में लेके चल रहा है ये। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आई है, जो कि पहले भी 1 2 बार एग्जाम में पूछी गई है आईआईटीज के, जिनमें हमें वीटी की वैल्यू नहीं गिवन थी, हमने 1 पर यूनिट लेके उसको चले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप चैलेंज कर सकते हो, मैं ये नहीं रोकूंगा किसी को कि आप चैलेंज मत कीजिए, बिकॉज कोई भी पॉसिबिलिटी है उसको क्यों ब्लॉक करें हम। अगर 1% चांस है आपको मिलने के, तो क्यों उसको रोका जाए। तो वीटी की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है। ये ईएफ की वैल्यू ये जो निकल के आ रही है, ये तभी निकल के आ रही है जब वीटी को हम 1 पर यूनिट लेते हैं। जब वीटी की वैल्यू मेरी 1 पर यूनिट होती है, तभी हम ये आंसर निकाल सकते हैं। पी आउट को, जो मोटर की पी आउट का जो एक्सप्रेशन होता है, उसमें मैक्सिमा की कंडीशन लगा दो कि वो मैक्स कब होगा, और वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक स्टेबिलिटी लिमिट। उस पी आउट मैक्स कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैटिक स्टेबिलिटी लिमिट। ओके, तो आप जो है वीटी की वैल्यू को 1 पर यूनिट मान के आप सोल्व कर सकते हो, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है वीटी की वैल्यू, तो आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि ये जो है एक्सेप्टेबल होगा, बिकॉज वो बोलेंगे कि भाई वीटी बाय डिफॉल्ट जब पर यूनिट में दे रखा है तो वीटी को बाय डिफॉल्ट 1 पर यूनिट मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट फिर भी आप जो है इसको जरूर से जरूर चैलेंज करें। ओके, सो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जिनको हमें चैलेंज करना था, तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं एक अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूं इसको, बट आप एक बार इसको थोड़ा सा देखिए कि ये स्टेटमेंट मैं 100% फॉल्स क्यों बोल रहा हूं। 100% फॉल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 3 ओनली लगा दिया है। 3 ओनली लगाने का मतलब बाकी सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देना। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट मेरी गलत हुई है, क्योंकि बाकी और भी पॉसिबिलिटी है। 3 ओनली पे आप नहीं कह सकते हो कि केवल 3 ओनली पे ही हमारा शंट कैपेसिटेंस लगा है। तो अगर आप 3 ओनली बोल देते हो तो क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी खत्म होगी, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, लेकिन इसको अगर दूसरे पहलू से देखते हो तो ये सही भी नजर आती है। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से ये होगा। दूसरा, रिले वाले क्वेश्चन में डी के लिए आप जा सकते हो, डी के लिए आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि अगर ए ठीक है तो डी तो पक्का ठीक होगा, ठीक है, इसमें तो कोई सुबह ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डी के लिए भी आप जरूर चैलेंज करें, डी ऑप्शन के लिए, ठीक है। और अदरवाइज आप ये भी चैलेंज कर सकते हो कि ब्लॉकिंग द फोल्ट, ये लाइन भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ब्लॉकिंग एंड ट्रिपिंग उसमें भी कंफ्यूजन है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ब्लॉकिंग द फोल्ट, ब्लॉकिंग फोल्ट का मतलब तो ये होता है कि जब फोल्ट हुआ तो उसको रोकना है, ठीक है, उसको फोल्ट होने पे ऑपरेट करना है। इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे फोल्ट हुआ, यहाँ पे फोल्ट हुआ, तो ये रिले ऑपरेट करेंगी। इसका मतलब ब्लॉकिंग फोल्ट का मतलब तो ये हुआ। अगर लाइन को सीधा मैं पढ़ के देखूं, उसका डायरेक्ट अगर मैं मीनिंग देखूं तो उसका मतलब तो यही है, ठीक है। लेकिन कई बार ये ब्लॉकिंग जो होता है जब ट्रिपिंग के रेफरेंस से यूज किया जाता है तो इसका मतलब है ऑपरेट ना होना, ठीक है, ऑपरेट ना करना। तो यहां पे एक कंफ्यूजन है और इस लाइन से बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जब भी कोई रिले का यूज होता है ब्लॉकिंग, तो वो ट्रिपिंग के रेफरेंस से यूज होता है और उसमें लिखा होता है कि या तो ब्लॉकिंग जोन में ऑपरेट कर रही है, या तो ऐसे लिखा होता है, या फिर बोला जाता है कि ब्लॉकिंग फॉर ट्रिपिंग, इस तरह से लिखा होता है, मतलब क्लियरली मेंशन होता है। तो आईआईटी से इस तरह का तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था भाई, कि भाई इस तरह की ये जो लैंग्वेज में अगर आप घुमा रहे हो, तो मुझे लग रहा है आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बट एनीवे, तो इस क्वेश्चन को भी आप डी के लिए आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। माने ना माने वो एक अलग इश्यू है, बट मेरे हिसाब से ये तो नहीं होना चाहिए, डी जो है वो एक करेक्ट आंसर मुझे नजर आता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे इनको आप चैलेंज कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं कि वो रह गए हैं तो आप उनको जरूर हमें सेंड कीजिए। हमें जो पॉसिबिलिटी लगती थी जिनको माना जा सकता है उनको हमने, एक आईएन का क्वेश्चन मैं लेना भूल गया, इसके अंदर आईएन में भी एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, ठीक है। आईएन में आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन था दोस्तों, शंट जनरेटर का। तो उसका वैसे तो जीरो आंसर है, मतलब आसानी क्वेश्चन था, बट आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हो कि वो जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है, डीसी मशीन सिलेबस में नहीं लिखी है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस में तो ऑब्वियसली आपको चैलेंज करना चाहिए। तो इसलिए आप उस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही हम करेंगे दोस्तों, एंड आई होप आपको समझ आ गया है। इनका एक पूरी हम लिख के दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़े हुए हैं, आप हमारे हमसे वैसे भी कनेक्ट रहोगे, तो डोंट वरी, आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो ये सब चीजें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हर चीज का, आप वहां पे जाइए और हमसे इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो है प्रॉपर फॉर्मेट में आप हमसे ले सकते हो और आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी हम भी कुछ स्टूडेंट के थ्रू चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप स्पेशली हमसे इस तरह से चैलेंज करना चाहते हो तो वो भी आप हमसे इसके सॉल्यूशन लेके चैलेंज करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे मुलाकात होगी, बट आप हमारी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे फ्री क्लासेस होती रहती हैं, बहुत सारी फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो इसलिए इसको भी आप इंस्टॉल करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।